अधिक विकासाला आहे भव्य श्रीरामगड, सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे विद्यापीठ. मान्यवरांचे आगमन झालेले आहे. कार्यक्रमाचा प्रारंभ राष्ट्रगीत आणि महाराष्ट्र गीताने होईल. कृपया सर्वांनी उभे राहावे. We request all of you to kindly rise for the national anthem and the Maharashtra Geet. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. भीती ना आम्हा तुझी मुळे गडगडणाऱ्या नभा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देते जिभा. सैनेचा सिंह गैजतो शिवशंभू राजा. दरी दरी तुना नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेहरी. ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीवनेनी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निघळाच्या घामाने भिजला. देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. गरजा महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या शताब्दी महोत्सव समारंभात व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय मान्यवरांचे मनपूर्वक स्वागत करून मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करून दीप प्रज्वलन करावे. We now come alive to the rich Indian traditions of beginning every auspicious occasion with the lighting of the traditional lamp. May we request our esteemed dignitaries on the dais to kindly light the traditional lamp. भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षीय विघ्नकृत. यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिर भव. Ladies and gentlemen, as we offer our soul's devotion and bow down to knowledge, may our vices and egos all burn out, just like the cotton wick in the lamp, and may the eternal flame of knowledge continue to illumine our lives forever.
हे दिव्या, तू देवस्वरूप आहेस, मानवाच्या प्रत्येक कर्मातील विघ्नहरण करणारा आणि मानव सुकर्माचा साक्षी आहेस. जोपर्यंत प्रारंभ केलेल्या सत्कर्माची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत तू तेजासह सुस्थिर रहा, हीच प्रार्थना. The lighting of the lamp at the hands of our esteemed dignitaries on the dais now marks the formal beginning of this centenary celebration program of the Rashtra Sant Tukdoji Maharaj, Nagpur University. माननीय कुलगुरू डॉक्टर सुभाष चौधरी यांना स्वागतपर भाषणासाठी सविनय आमंत्रित करते. I now request the Honorable Vice Chancellor of the University, Dr. Subhash Chaudhary, to please deliver his welcome address. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रतिमेला मी अभिवादन करतो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ शताब्दी महोत्सव उद्घाटन समारंभास उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपती श्री जगदीशजी धनखड़, माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिनजी गडकरी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू, व्यवस्थापन परिषदेचे सर्व सन्मान्य सदस्य, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, विद्यापीठाचे कुलसचिव, विद्यापीठाच्या अधिसभेचे सर्व सन्मान्य सदस्य, विद्या परिषद आणि विद्यापीठाच्या विविध समित्यांचे सदस्य, विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे प्रमुख, संलग्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षक, विद्यापीठाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी आणि समारंभासाठी आमंत्रित प्रतिष्ठित नागरिक, तसेच प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, विद्यापीठाच्या आजच्या संपन्न होत असलेल्या शताब्दी महोत्सव समारंभाला मी आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. समारंभाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले माननीय उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखड़जी, तसेच अध्यक्ष म्हणून लाभलेले राज्याचे राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती माननीय श्री रमेश बैस व माननीय उपराष्ट्रपती महोदयांचे सुविज्ञ पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ यांचे मी या विद्यापीठाचा कुलगुरू या नात्याने विशेष स्वागत करतो. या व्यासपीठावरून व्यक्त होणारे त्यांचे विचार आम्हाला पुढील वाटचालीच्या दृष्टीने निश्चितच मार्गदर्शक ठरतील याची मला खात्री आहे. त्यांच्या येथील उपस्थितीबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. मान्यवर, 4 अगस्त 2023 को स्थापित हमारा विद्यापीठ प्रगति की गौरवशाली परंपरा निर्मित करते हुए आज 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है. यह हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है. 1923 में मात्र 6 महाविद्यालयों के साथ शुरू हुआ यह विद्यापीठ आज 512 महाविद्यालयों के साथ मध्य भारत के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े विद्यापीठ के रूप में जाना जाता है. आज विद्यापीठ का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है. आज इस विद्यापीठ के 100 वर्ष पूर्व रोपे गए बीज के विशाल वटवृक्ष बनने का प्रमाण है. राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति NAAC से गुणवत्ता की दृष्टि से विद्यापीठ को अ श्रेणी प्राप्त हुआ है. पिछले 2 वर्षों में विद्यापीठ ने कई नए उपक्रम शुरू किए जिनके सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं. बहुत ही अल्प समय में विद्यापीठ के इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर ने उल्लेखनीय कार्य किया है. विद्यार्थियों के रोजगार की दृष्टि से प्रशिक्षण एवं रोजगार सेल की स्थापना की गई, जिनमें बहुत कम समय में अभी तक 1000 से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया है. कौशलपरक पाठ्यक्रम अधिक से अधिक संख्या में शुरू करने के लिए विद्यापीठ के आजीवन अध्ययन केंद्र को और प्रभावी बनाया गया है. विद्यापीठ के शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की गई है. आज विद्यापीठ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. इस परिक्षेत्र में अब तक अनेक उल्लेखनीय कार्य शताब्दी वर्ष के निमित्त संपन्न हुए हैं. इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 108वीं अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस मतलब 108 इंडियन साइंस कांग्रेस एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल साइंस कांग्रेस का आयोजन विशेष महत्वपूर्ण है. साथ ही NSS का राष्ट्रीय स्तर का कैंप और NSS का राज्य स्तरीय का वर्कशॉप का आयोजन विशेष महत्वपूर्ण है. उल्लेखनीय बात यह भी है कि 100 वर्ष के उपलक्ष्य में विद्यापीठ के नाम पर पोस्टल स्टैंप रिलीज़ हुआ है. इस वर्ष
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी साधना पुरस्कार जिन्हें घोषित किया गया है वे डॉक्टर HM दागिनावाला जो साइंस स्ट्रीम से हैं। उसी तरह जीवन साधना पुरस्कार हल्दीराम इंडस्ट्री ग्रुप से डॉक्टर शिवकिशन अग्रवाल, एजुकेशन ग्रुप से प्राध्यापक सुरेश देशमुख, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर निरुपमा देशपांडे और लोक कला क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हरीशचंद्र बोरकर, इन सब का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि विद्यापीठ के सभी संबंधित घटकों का सहकार्य विद्यापीठ के योजनाओं के कार्यान्वयन में मिलेगा। इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your very warm words of welcome. Ladies and gentlemen, our coveted dignitaries on the dais this afternoon have added an unsurpassing grace to this centenary celebration of the Rashtra Sant Tukdoji Maharaj, Nagpur University. We would now like to offer our respectful felicitations to all our esteemed guests. May I very firstly request the Honorable Vice Chancellor of the University, Dr. Subhash Chaudhary, to please felicitate the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankharji. We warmly welcome you, sir, at our university. माननीय उपराष्ट्रपती सौभाग्यवती डॉक्टर सुदेश धनखड यांचे स्वागत करण्याची विनंती मी माननीय कुलगुरू महोदय डॉक्टर सुभाष चौधरी यांना करते. May I request the Pro Vice Chancellor of the University, Dr. Sanjay Dudhe, to please felicitate Honorable Shri Ramesh Ji Bes, the Honorable Governor of the State of Maharashtra. माननीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांचे स्वागत माननीय कुलगुरू डॉक्टर सुभाष चौधरी करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. May I request the Honorable Pro Vice Chancellor of the University, Dr. Sanjay Dudhe, to please felicitate Shri Devendra Fadnavis ji, the Honorable Deputy Chief Minister of the State of Maharashtra. मान्यवरांचे धन्यवाद. माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना शताब्दी महोत्सवावर मनोगतासाठी सविनय आमंत्रित करते. We respectfully invite the Deputy Chief Minister of the State of Maharashtra, Shri Devendraji Fadnavis, for his address. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि ज्यांनी ग्रामगीतेच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात एक नवी क्रांती आणली आणि महात्मा गांधींना अपेक्षित असलेलं ग्रामविकास आणि ग्रामस्वराज्य स्थापित करण्याची प्रेरणा दिली. ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना देखील आज या निमित्ताने वंदन करतो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या शताब्दी महोत्सवाच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले भारताचे आदरणीय उपराष्ट्रपती माननीय श्री जगदीश धनखडजी, त्यांच्या सुविद्य पत्नी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखडजी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैसजी, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी, विद्यापीठाचे कुलगुरू
श्री सुभाष चौधरीजी, परकुलगुरू डॉक्टर संजय दुधेजी आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले नागपूर आणि महाराष्ट्रातील अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, माजी कुलगुरू, शिक्षण क्षेत्रातले अनेक मान्यवर, विविध क्षेत्रातले सर्व मान्यवर आणि या विद्यापीठावर प्रेम करणारे सर्व नागरिक, भगिनी आणि बंधूंनो, विद्यार्थी मित्रांनो, मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ये स्वागत करते समय मैं 2 रूपों में स्वागत करना चाहूँगा। पहले तो महाराष्ट्र की सरकार की ओर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र की धरती पर नागपुर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और दूसरे नागपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में मैं आपका इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बहुत मन से स्वागत करता हूँ। नितिन जी और मैं, हम दोनों इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और ये बहुत हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी यहाँ पर उपस्थित है। नागपूर विद्यापीठाचा इतिहास हा आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे। हे केवळ एक शिक्षेचं केंद्र राहिलं नाही, तर सामाजिक चळवळीचं देखील केंद्र राहिलं आहे आणि ज्या ज्या वेळी देशाला आणि समाजाला आवश्यकता होती त्या त्यावेळी आपली भूमिका अतिशय समर्थपणे पार पाडणारं अशा प्रकारचं विद्यापीठ आहे। 1942च्या चले जाओ चळवळीमध्ये ज्यावेळी अनेकांना महाविद्यालय सोडावी लागली त्यावेळी त्यांच्याकरता पुन्हा परीक्षा घेण्याचं काम जर देशात कुठल्या विश्वविद्यालयाने केलं असेल, विद्यापीठाने केलं असेल, तर ते नागपूर विद्यापीठ होतं की ज्यांनी त्यावेळेस ही हिंमत दाखवली। केवळ वंदे मातरम म्हटलं म्हणून उस्मानिया विद्यापीठाने 500 विद्यार्थ्यांना काढलं। देशातलं कुठलंच विद्यापीठ त्यावेळी या विद्यार्थ्यांना जागा द्यायला तयार नव्हतं। त्यावेळी त्यांच्याकरता उभं राहिलं ते नागपूर विद्यापीठ आणि या 500 विद्यार्थ्यांना याच नागपूर विद्यापीठाने त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं जागा दिली। इंग्रजांची राजवट असताना 1938 साली महात्मा गांधींना डॉक्टर ऑफ लॉ ही मानद उपाधी देण्याचं काम देखील याच नागपूर विद्यापीठाने त्यावेळी केलं आणि ज्यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या सगळ्या डिग्र्या आणि उपाध्या काढून घेतल्या त्यावेळेस हिमतीनं त्यांना डिलीट देणारं विद्यापीठही हे नागपूर विद्यापीठ होतं, हे देखील आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे। आणि त्यावेळेस खरं म्हणजे ज्यावेळेस ही डिलीट स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना दिली जात होती त्यावेळेस त्यांनी डिलीट करता गाऊन तर चढवला, पण ती जी टोपी होती ती घालायला इन्कार केला आणि त्यांनी सांगितलं परकीयांचं ओझं हे मी खांद्यावर घेऊ शकतो पण ते डोक्यावर घेऊ शकत नाही। आणि त्यावेळी ती टोपी न घालता खऱ्या अर्थानं त्यांनी ती डिलीट स्वीकारली होती। आणि म्हणून राष्ट्रभक्तीचा एक मोठा संस्कार हा या विद्यापीठाला या ठिकाणी लाभलेला आहे। आणि आपल्याला कल्पना आहे की या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे, देवरची असा दे, अशा प्रकारचं एक अतिशय चांगलं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचं गीत हे या विद्यापीठाला कुलगुरूंनी त्या काळामध्ये दिलं आणि आज मला असं वाटतं की आपल्या सर्वांकरता हे गीत एक अत्यंत महत्त्वाचं गीत झालं आहे आणि याच्यातला जो भाव आहे तोच भाव राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ हे निश्चितपणे आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतं आहे, हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे। खरं तर आपण बघितलं असेल तर नागपूरची मातीच
ही एक संस्कार देणारी, एक परिवर्तन देणारी अशा प्रकारची माती आहे. आणि त्या मातीमध्ये या विद्यापीठांनी ज्या प्रकारच्या लोकांना तयार केलं ते देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या देशाचे उपराष्ट्रपती आदरणीय हिदायतुल्ला साहेब असतील, देशाचे पंतप्रधान PV नरसिंहराव साहेब असतील, सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस असतील, 5 राज्यपाल या विद्यापीठातनं ज्यांनी डिग्री घेतली असे होते. रासू गवई साहेब, रजनीताई रॉय, प्रभा राव, त्यानंतर श्रीराम नारायण आणि SP कोतवाल. 4 मुख्यमंत्री या विद्यापीठाने दिले आहेत माझ्यासहित. त्यातलं मी शेवटचा सुधाकरराव नाईक, म्हणजे माझ्यानंतर येतील असं नाही आहे, सुधाकरराव नाईक, वसंतराव नाईक, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर देखील नागपूर विद्यापीठाचेच विद्यार्थी होते. 7 केंद्रीय मंत्री या विद्यापीठाने दिले आहेत, ज्याच्यामध्ये नितीनजी आहेत, माननीय नितीनजी असतील, NKP साळवे साहेब असतील, वसंतराव साठे साहेब असतील, त्याचप्रमाणे सरन्यायाधीश शरद बोबळे साहेब हे देखील या विद्यापीठाचे. त्यामुळे राज्याच्या विविध राज्यांमध्ये जे त्या ठिकाणी चीफ जस्टिस म्हणून गेले असे अनेक लोक या विद्यापीठाने दिल्यात, ज्यातले शिरपूरकर सर ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. विकास शिरपूरकरजी असतील, JN पटेलजी असतील, MN चांदूरकर असतील, रुमापाल असतील, चंद्रशेखर धर्माधिकारी असतील, अशोक देसाई असतील, हरीश साळवेंसारखे जे आज जगातले एक अतिशय ज्येष्ठ विधिज्ञ मानले जातात ते देखील याच विद्यापीठाशी संबंधित आहेत. अमेरिकेमध्ये सिनेट सदस्य होणाऱ्या स्वाती दांडेकर असतील, विजय भाटकरांसारखे शास्त्रज्ञ असतील, प्रेमदास किंवा तरुणदास यांच्यासारखे अभिनेते असतील, राजकुमार हिराणींसारखे दिग्दर्शक असतील, ग्रेस एलकुंचवार, नामदेव कांबळे, यशवंत मानोर, पुभा भावे यांच्यासारखे अत्यंत मराठीला उंचीवर नेणारे साहित्यिक आणि कवी असतील, किंवा बाबा आमटे, सुमतीताई सुकळीकर, कमलाताई हॉस्पेट, रवी आणि स्मिता कोल्हे, प्रकाश आणि मंदाकिनी आमटे, अभय आणि राणी बंग यांच्यासारखे समाजसेवक असतील, मधुकरराव चौधरी, प्रमोद शेंडे, मोरेश्वर टेंभुर्णे. खरं म्हणजे यादी संपतच नाही, इतकी मोठी यादी आहे. मी ज्यावेळेस ही नावं घेत असेल त्यावेळेस आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये अजून अशी 100 नावं येत असतील की ज्यांनी या देशाचं नाव उंच केलं. अशा प्रकारचे अनेक विद्यार्थी या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आपल्या या विद्यापीठांनी घडवले आहेत. आणि आता 100 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर विद्यापीठासमोर नवीन आव्हानं देखील आहेत. आता देशामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण आलं आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणातनं देशाकरता 21व्या शतकामध्ये 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी होणाऱ्या या आपल्या देशाकरता आणि 1 ट्रिलियन होणाऱ्या आपल्या राज्याकरता उचित मानव संसाधन तयार करण्याची जबाबदारी ही आपल्या विद्यापीठावर आहे. आणि मला असं वाटतं की येत्या काळामध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता हाच खरा निकष प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेकरता असणार आहे. नागपूर विद्यापीठाने NAACचा अ दर्जा मिळवला आहे, पण त्याहीपेक्षा अधिक चांगलं आपल्याला कसं करता येईल, जास्तीत जास्त विद्यालयांना स्वायत्तता कशी देता येईल, विद्यापीठाचा रोल हा गुणवत्ता राखण्याच्या दृष्टीनं अधिकाधिक कसा असेल, आपल्याला आपल्या कारभारामध्ये अधिक पारदर्शिता कशी आणता येईल, आपल्याला जे जगामध्ये अत्यंत नवनवीन कोर्सेस आहेत ते आपल्याला कसे आणता येतील, बदलत्या परिवेशामध्ये ज्या नवीन जॉब्सच्या संधी मिळत आहेत त्या संधी अनुरूप मानव संसाधन आपल्याला कसं तयार करता येईल, अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी आपल्याला या विद्यापीठामध्ये कराव्या लागतील. आणि मला विश्वास आहे की यामध्ये कधीच विद्यापीठ मागे राहणार नाही. आमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा आहेत. आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही विद्यापीठाला 100 वर्ष झाल्याच्या निमित्ताने 100 कोटी रुपये हे विद्यापीठाला दिलेले आहेत आणि त्या माध्यमातून त्याचा योग्य असा विनियोग निश्चितपणे विद्यापीठ करेल आणि आपल्या विद्यापीठाचा दर्जा वाढवण्याकरता अतिशय चांगल्या प्रकारचं कार्य विद्यापीठाच्या हातून होईल. मी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना, प्रकुलगुरूंना, सगळ्या या विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये, माझ्या विद्यापीठाच्या कार्यक्रमामध्ये
मला सम्मिलित होता आलं त्याबद्दल त्यांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद. शताब्दी समारंभच्या पर्वावर आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी यांना सविनय आमंत्रित करते. I now invite the Honorable Union Minister for Highways and Road Transport, Shri Nitinji Gadkari, to please address this august gathering. भारताचे महामहिम उपराष्ट्रपती परमादरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती डॉक्टर धनखड़, महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्राचे माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, आपल्या विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सुभाष चौधरी, प्रकुलगुरू डॉक्टर संजय दुधे, या कार्यक्रमात विशेष रूपाने उपस्थित असणारे नागपूर विद्यापीठाचे पूर्व कुलगुरू डॉक्टर पठाण, डॉक्टर सपकाळ, डॉक्टर काणे, विद्यापीठाशी संबंधितच पण ज्यांनी नागपूर विद्यापीठाशी ज्यांचा संबंध राहिलेला आहे पण आपल्या संत गाडगे महाराज विद्यापीठ अमरावती त्याच्या पूर्व कुलगुरू डॉक्टर कमल सिंग, पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर निंबाळकर, संत गाडगे महाराज अमरावती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर आणि विशेषतः या विद्यापीठाशी ज्यांचा संबंध राहिलेला आहे असे माजी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती शिरपूरकर साहेब, सर्व आदरणीय अतिथीगण आणि उपस्थित सर्व बंधूंनो आणि भगिनींनो, माझं भाषण उपराष्ट्रपतींनाही समजलं पाहिजे म्हणून मी हिंदीत बोलतो है. सबसे पहले मैं उपराष्ट्रपति जी का इस शहर में मनपूर्वक स्वागत करूंगा. सर, ये नागपुर देश का हृदय स्थान है और 0 मील नागपुर से शुरू होता है. नागपुर ये ऑरेंज सिटी करके भी प्रसिद्ध है और टाइगर कैपिटल भी करके भी प्रसिद्ध है. इस शहर की विशेषता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इसी भूमि पर ली है. पूरे दुनिया में जो उन्होंने वैचारिक क्रांति की उसकी शुरुआत इस पवित्र दीक्षा भूमि पर उनने भगवान गौतम बुद्ध जी को साक्षी रखकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली. पूरे विश्व में प्रसिद्ध संगठन हुआ है जो सबसे शक्तिशाली रूप में आज आया है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी नागपुर में हुई है और इसी हॉल के पीछे में डॉक्टर हेडगेवार जी की समाधि है. नागपुर का सामाजिक राजनीतिक इतिहास बड़ा रोचक है और उसी प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी का भी इतिहास बहुत पुराना है. 100 साल हमारे यूनिवर्सिटी ने पूरे किए हैं और उस हमारी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि मैं हो, देवेंद्र जी है, हमने अपने जीवन की शुरुआत इसी यूनिवर्सिटी से की है. मैं इमरजेंसी में 75 में पहली बार कॉलेज के प्रथम वर्ष में आया था, तब इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी और उसकी लड़ाई शुरू हुई वहाँ से इमरजेंसी के खिलाफ. तो छात्र नेता के रूप में इस यूनिवर्सिटी में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की. इस यूनिवर्सिटी में अनेक महानुभाव, जिसका आप देवेंद्र जी ने डिटेल में जानकारी दी है, पर जस्टिस हिदायतुल्लाह जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो हमारी यूनिवर्सिटी से थे. हमारे नरसिंह राव जी जो देश के प्रधानमंत्री बने वो हमारी यूनिवर्सिटी से थे. शरद बोबड़े जी जो चीफ जस्टिस शिरपुरकर साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यशस्वी रूप से काम किया वो हमारी यूनिवर्सिटी के रहे. साहित्यिक, विशेष रूप से अनेक कवि और विविध क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे असामान्य अनेक व्यक्ति जिन्होंने इस विद्यापीठ के नाम को गौरवान्वित करने का कार्य किया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस विद्यापीठ का इतिहास बहुत पुराना है. मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर चौधरी जी, उनके अनुरोध पर मैंने भी आपसे अनुरोध किया था
कि जब ये शताब्दी समारोह का समाप्त करने के बारे में विषय आया तो किसको बुलाना चाहिए, तो हम सबके मन में ये आया कि आपको बुलाना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ और आप सबको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेरा धनखड़ जी का बहुत पुराना परिचय है। वो आज राज्यसभा में हमारे प्रमुख हैं। राज्यसभा में उनके अनेक बार अनेक बातें हमको सुनने को मिलती है, पर धनखड़ जी की एक बड़ी विशेषता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े यशस्वी एडवोकेट रहे हैं और अनेक केसेस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें रखी है वो आज भी रिकॉर्ड पर हैं। मुझे अनेक बार ऐसा मौका मिला है कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस में जब ऐसी आवश्यकता लगी तो उनका मार्गदर्शन लेने का मुझे उस समय अनेक बार अवसर मिला है। बहुत ही विद्वान, डाउन टू अर्थ और गांव गरीब मजदूर और किसानों की समस्या को समझने वाले हैं। राजस्थान के एक किसान परिवार से एक प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ते हुए उन्होंने नाम कमाया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के रूप में राज्यसभा में तो विशेष रूप से वो मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में, और आज वो विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये बात निश्चित है कि शिक्षा का सार्वत्रिकरण होना चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं है, पर सार्वत्रिकरण होने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी निरंतर बढ़नी चाहिए। स्वाभाविक रूप से नॉलेज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ताकत है। मैं अक्सर ये मानता हूँ कि आज दुनिया की प्रगति और विकास जिन जिन देशों का हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो उन देशों ने टेक्नोलॉजी और रिसर्च में और एजुकेशन और नॉलेज में जो सफलता हासिल की है वो उनके यश का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future। हमारे विद्यापीठ की भी विशेषता ये है कि विशेष रूप से हमारे विदर्भ के सभी प्रकार के विकास में साहित्य हो, संस्कृति हो, कला हो, हमारे यहाँ हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, हमारे यहाँ का इंजीनियरिंग हो, सब बातों में हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सर विश्वेश्वरैया जी जो थे उनका नागपुर से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन इस यूनिवर्सिटी को दिया है। जो लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, LIT, जिसको अभी महाराष्ट्र सरकार ने और विशेष रूप से देवेंद्र जी ने इनिशिएटिव लेकर स्वायत्तता दी है, उस LIT से देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ से तैयार हुए हैं। हमारा जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो इतना महत्वपूर्ण है कि बीच में वहाँ के विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा था तो कम से कम 40 से 50 हज़ार करोड़ का टर्नओवर जिन फार्मास्यूटिकल कंपनी का है उसके मालिक हमारे इस नागपुर यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट से प्रशिक्षित होकर गए हुए हैं। हमारा विदर्भ क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा, और अमरावती ज़िले में भी फॉरेस्ट है। हमारे महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स हमारे यहाँ हैं, मैग्नीज है, कोल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ हमारे यहाँ मिहान करके एक नया प्रकल्प शुरू हुआ है। देवेंद्र जी और मैं दोनों की हमारी इच्छा है कि हमारे यूनिवर्सिटी से तैयार हुए कम से कम 1 लाख लोग, 1 लाख तरुण विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटी से, विदर्भ से संबंधित, इनको मिहान में रोजगार मिले। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अक्सर इसके नाम से आंकड़े लिख कर रखते रहता हूँ कि कहाँ तक, अब 60,000 तक हम पहुँचे हैं, और जल्दी ही TCS आया, टेक महिंद्रा आया और SCL आया, और इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है कि नागपुर ये IT हब भी होगा। जो एविएशन है, जो राफेल है, ये राफेल अब नागपुर में बनने वाला है। इसका भी पहले 250 राफेल फ्रांस से आने वाले थे,
पर इसके बाद जो डोसाल्ट करके कंपनी जो फॉल्कन जेट बनाती है वो यहाँ अपना उन्होंने काम शुरू किया है, और वैसे भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक हम बनाएंगे, प्रोसेस में है। जो एयरबस और बोइंग कंपनी है, इसमें टाल नाम की टाटा की कंपनी और दोनों कंपनियों के करीब 1200 पार्ट्स जो हवाई जहाज में यूज़ होते हैं वो नागपुर में बनते हैं। हमारे यहाँ विशेष रूप से नागपुर के औद्योगिकरण का संबंध विदर्भ के विकास के साथ है। जो गढ़चिरौली जिला है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, बीच में नक्सलाइट मूवमेंट्स के कारण एक प्रकार से बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं थी। अब वहाँ उद्योग व्यवसाय की शुरुआत हुई है, और स्वाभाविक रूप से हमारे यूनिवर्सिटी से और विद्यापीठ से ये अपेक्षा है कि हमारे यहाँ का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और औद्योगिक विकास में हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन होगा। विद्यापीठ से हमको नई विजन कैसे मिलेगी, जो प्रशिक्षित होने वाले विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी से तैयार होंगे उनको रोजगार कैसे मिलेगा। और इसलिए यूनिवर्सिटी और यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ हम लोग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स ये लगातार प्रयास करते रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विद्यापीठ का हमारे इतिहास में, पूरे विदर्भ के इतिहास में, क्योंकि महाराष्ट्र में विदर्भ ये थोड़ा यहाँ भी आपको पता ही है कि विदर्भ, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोंकण विकास के लिए मैं करीब 18-20 साल महाराष्ट्र के विधानमंडल में था, तो विदर्भ के साथ अन्याय होता है इस बात को लेकर हम काफ़ी संघर्ष करते हुए आए हैं। विदर्भ का सर्वांगीण विकास हो ये हमारी सबकी अपेक्षा भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी यूनिवर्सिटी जैसे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर यूनिवर्सिटी, संत गाडगे महाराज यूनिवर्सिटी अमरावती यूनिवर्सिटी, और अब गोंडवाना यूनिवर्सिटी ट्राइबल क्षेत्र में हमारे यहाँ 3 यूनिवर्सिटी विदर्भ को मिली है, और पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है। ये चारों विद्यापीठों के द्वारा यहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिए भविष्य की विजन कैसी हो, रिसर्च कैसा हो, एजुकेशन कैसा हो, ट्रेनिंग कैसा हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे खुशी है कि आज आप विशेष रूप से यहाँ आए, और ये जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज है ये हमारे लिए बड़े प्रेरणा का स्तोत्र है। हम बचपन में उनके भजन सुनते थे, मनी नाही भाव मने देवा मले पाव, देव अशा न भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, दगडाचा देव त्याले वज्राचे भेव, सोन्या चांदीचा देव त्याले चोराचे भेव, देव अशाने भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। हमारे डॉक्टर पठान साहब ने उनके कार्यकाल में ये राष्ट्र संत तुकडोजी का बहुत अच्छा गीत हमारी यूनिवर्सिटी को दिया है। और तुकडोजी महाराज का जीवन, उनकी रचनाएं आज भी हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। उनकी प्रेरणा, ग्रामीण विकास की कल्पना और प्रबोधन प्रशिक्षण करने में हमारी गांव की भाषा में उन्होंने की हुई रचनाएं अमर हैं। उनकी बहुत बड़ी मान्यता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी है, और ऐसे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के नाम से ये नागपुर यूनिवर्सिटी है। एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की भी जिम्मेदारी उसके कारण यूनिवर्सिटी के ऊपर है, और आर्थिक, शैक्षणिक और विशेष रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकास करने की अपेक्षा भी है। बहुत अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम हमने बहुत अच्छे तरीके से मनाया। अनेक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यापीठ में हुआ, और आज ये शताब्दी महोत्सव के समारोह के लिए आप आए, ये हम सब का परम भाग्य है। मैं फिर से एक बार हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इसलिए हमारे इस कार्यक्रम में आए, और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आजच्या शताब्दी समारंभाचे अध्यक्ष माननीय राज्यपाल श्री रमेशजी बैस यांना अध्यक्षीय भाषणासाठी विनयपूर्वक आमंत्रित करते। Ladies and gentlemen, I now have the honor of inviting the Honorable Governor of the State of Maharashtra, Shri Ramesh G. Bais, for his address. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी नागपुर विश्वविद्यालय का
शताब्दी महोत्सव में उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन महामार्ग, श्री देवेंद्र फडणवीस जी माननीय उप मुख्यमंत्री, डॉक्टर सुभाष चौधरी कुलपति राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर संजय दुधे प्रो वाइस चांसलर, विश्वविद्यालय के प्रबंधन परिषद के सदस्य, शिक्षक, स्टाफ, अभिभावक, छात्र छात्राएं एवं मीडिया कर्मी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का कुलापति होने के नाते विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में उपस्थित हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुंबई विश्वविद्यालय के बाद राज्य का दूसरा सबसे पुराना यह विश्वविद्यालय अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। इस यादगार अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के महान संत तुकडोजी महाराज के नाम से सुशोभित और प्रख्यात है। आज के इस स्मरणीय अवसर पर मैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की पुण्य स्मृति का अभिवादन करता हूँ। आज विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जीवन साधना सम्मान से सम्मानित बायोटेक्नोलॉजी के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर H.F. दागिनावाला, हल्दीराम समूह के संस्थापक अध्यक्ष श्री शिव किशन अग्रवाल, यशवंत ग्रामीण शिक्षण संस्था वर्धा के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश देशमुख, संपूर्ण बांबू के केंद्र की अध्यक्षा डॉक्टर निरुपमा देशपांडे तथा साहित्य लोक कला क्षेत्र से जुड़े श्री हरिश्चंद्र बोरकर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नागपुर विश्वविद्यालय ने देश को शीर्ष न्यायविद, वकील, सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत लोग दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी काफ़ी लंबे नाम गिनाए। अब मेरी जानकारी में जो कुछ था उसको मैं बता सकता हूँ। इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय ने देश को पूर्व प्रधानमंत्री V.P. नरसिम्हा राव दिया, पूर्व उपराष्ट्रपति जस्टिस M.N. हिदायतुल्ला, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस शरद बोबडे, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सांसद श्रीकांत जिचकार जी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित उल्लास कसालकर जी, पूर्व मंत्री NPK साल्वे जी, कवि सुदेश भट्ट जी, कवि ग्रेस जैसे कई दिग्गज इस भूमि ने दिए हैं। विश्वविद्यालय के अनेक पूर्व छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में देश विदेश में असाधारण योगदान दिया है। विश्वविद्यालय अपनी महान परंपरा के आगे बरकरार रखेगा ऐसा मुझे विश्वास है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय विभिन्न विभागों में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय का विधि विभाग, फार्मेसी विभाग, पत्रकारिता विभाग उत्कृष्टता के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। मैं कामना और आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विभागों और महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्रों में रूपांतरित करें। एक समय था जब युवाओं के करियर के लिए विकल्प सीमित थे। आमतौर पर स्नातक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे। हमारे उपराष्ट्रपति जी स्वयं एक प्रसिद्ध संवैधानिक वकील रहे हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। उन दिनों नौकरियां सुरक्षित थी। एक बार लोग नौकरी करने लग जाते तो वे
आमतौर पर उसी संगठन से सेवानिवृत्त हो जाते थे। लोग सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित नौकरी मानते थे। आज हमारे समाज में बहुत परिवर्तन आ रहा है। हम एक चुनौतीपूर्ण समाज की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरियां कम हो रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही है। एक और परिवर्तन आया है, आपके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन सालाना नहीं बल्कि महीने के और यहाँ तक कि केस टू केस किया जाता है। पहले हम इतने वर्षों तक जिस शिक्षा नीति का पालन करते थे वह मोटे रूप से ब्रिटिश शासकों द्वारा ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई गई थी जो सिर्फ नौकरी करने लायक थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और नेतृत्व की वजह से हमारे देश में पहली बार ऐसी शिक्षा नीति पेश की गई है जो उद्यमता, नवाचार, अनुसंधान, रचनात्मक सोच और महत्वपूर्ण चिंतन की ओर जाती है। आप जिस नए समाज में कदम रख रहे हैं वह एक उद्यमशील समाज है। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई उद्यमी है, लेकिन इसका मतलब यह कि आप जहां भी खड़े हों या नौकरी करते हो, आपको उद्यमशीलता की भावना से काम करना होगा। आपको एक टीम लीडर और एक प्रवर्तक बनना होगा। आप भाग्यशाली हैं। नवाचार स्टार्टअप के प्रवर्तक श्री नितिन गडकरी जी स्वयं आपके सम्मुख विराजमान हैं। उद्यमता विकास की कुंजी है। दुनिया का सबसे बड़ा युवा जनसंख्या वाला देश होने के नाते अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कई देश कुशल मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा आज भारत की ओर देख रहे हैं। जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश और उम्र दराज जनसंख्या वाले कई अन्य देश उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जैसा युवा देश इस अवसर पर आगे आएगा और कुशल नौकरियों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसी सप्ताह जापान के प्रधानमंत्री ने उनके गिरते जन्म दर पर गहन चिंता जताई है। आज समय आ गया है जब पूरी दुनिया हमारा कार्यस्थल बने। प्रत्येक युवा कम से कम विश्व की एक भाषा सीखे। अपने आप को केवल नागपुर, मुंबई या महाराष्ट्र तक ही सीमित न रखें। भारत के किसी भी राज्य और दुनिया के किसी भी छोर तक जाने के लिए तैयार रहिए। एक समय था जब चीन, जापान, श्रीलंका से लेकर अनेक देशों से लोग भारत में अध्ययन करने आते थे। आज हम पूरी दुनिया के लिए उत्कृष्ट शिक्षक निर्माण कर सकते हैं। हमारे पास जनशक्ति और प्रतिभा है। हमें शिक्षण और के क्षेत्र में और अधिक छात्रों को आकर्षित करके विश्व के लिए अधिक शिक्षक तैयार करनी चाहिए। भारत ने दुनिया को योग से परिचित कराया। मेरा मानना है कि योग के प्रसार के साथ साथ भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षक निर्माणकर्ता भी बनना चाहिए। दुनिया भर के विश्वविद्यालय छात्रों को आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के मिसौरी के सेंट लुइस विश्वविद्यालय के प्रोवेस्ट ने मुझसे मुलाकात की। यह एक निजी विश्वविद्यालय है। मुंबई के अंजुमन इस्लाम संस्थान ने अमेरिका के MIT के साथ साझेदारी की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है। विश्वविद्यालय विभागों को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करनी चाहिए और छात्रों को सर्वोत्तम सीखने का अनुभव देना चाहिए। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों की महानता उनकी सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखने की क्षमता में निहित है। उनकी सफलता ऐसे पाठ्यक्रमों की पेशकश करने में निहित है जो समय से आगे हैं। उनकी सफलता अपने स्नातकों में आलोचनात्मक सोच और नेतृत्व गुणों को विकसित करने में है। यह वही परिवर्तन है जिसकी हमें आवश्यकता और हम चाहते हैं। आज के युवा विश्वविद्यालय चुनने में बहुत चयनात्मक होते हैं। वे जांचते हैं कि किस फैकल्टी मेंबर्स कौन है।
इस महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, लेखक, इतिहासकार और नोबेल पुरस्कार विजेता भी महान विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। हमें देश के महानतम उद्योगपतियों, गायकों, कलाकारों, व्यापारिक नेताओं और विश्वविद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए और विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में उन्हें शामिल करना चाहिए। समय आ गया है कि हमारे स्नातक भारत को फिर से महान बनाने के लिए उद्यमी, धन के निर्माता और स्टार्टअप के निर्माता बने। प्रशासक सुधार पर हमारे सभी विश्वविद्यालयों को बहुत ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय को छात्रों की जरूरत के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मैं विश्वविद्यालय से के छात्र केंद्रित होने का आग्रह करता हूँ। विश्वविद्यालय के शताब्दी के पावन अवसर पर मैं राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को राष्ट्र के लिए समर्पित सेवाओं के लिए बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पूर्णपणे ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहे। ज्ञानदान करणाऱ्या या महाकाय वटवृक्षाची 100 वर्षांची वाटचाल अंशरूपात का होईना एकसंध करून त्याला शतदीपपूर्ती या स्मरणिकेच्या रूपात मूर्तरूप देण्याचा नागपूर विद्यापीठाने प्रयत्न केलेला आहे। शतदीपपूर्ती या स्मरणिकेच्या व्यवस्थापकीय संपादक डॉक्टर उर्मिला डबीर, मुख्य संपादक डॉक्टर अजिंक्य एदलाबादकर, कार्यकारी संपादक डॉक्टर अमृता इंदूरकर, मुद्रक श्री अभय कोट्टेवार, श्री प्रदीप बिनीवाले यांच्या संपादन सहकार्यातून प्रस्तुत स्मरणिका साकार झाली आहे। माननीय उपराष्ट्रपती श्री जगदीपजी धनखड यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते शतदीपपूर्ती स्मरणिकेचे विमोचन करावे। May we now request the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, to please release the souvenir of the university, the Shatabdi Smaranika titled Shatadeepa Purti. Thank you very much. Ladies and gentlemen, after this release of the souvenir, I now have the honor of inviting the chief guest of this ceremony today, the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Ji Dhankar, to the podium. May I respectfully request you, sir, to please address the elite and eager assembly. Sometimes you do need support. It is the support that makes you what you are. My greetings to everyone present here. Before I reflect on Nagpur, epicenter of nationalism, every visit to Nagpur has been inspirational, motivational, and energizing. This one is unique and different. It is with full power packing. I am grateful to Shri Nitin Gadkari ji for making this opportunity available to me. It has been indicated
that Nagpur is known for oranges and it is also known for tigers. Two of the tigers are present here on the stage. Their spinal strength has been seen by one and all. But one tiger makes my task in Rajya Sabha difficult. When he rises to answer a question, I am in great difficulty. Every member of the house wants to ask question, and not as a complainant, but with hope and aspirations. This happened yesterday. A man of action, a man who believes in vision which is executed and realized on the ground. As luck would have it, all my visits to Nagpur so far have been with Gadkariji at the center of it. Honorable Sri Ramesh Bhaiji, I share one thing in common with him. He was elected to Parliament for the first time in 1989. I was also elected to Parliament in 89. I was part of the ruling dispensation and I was a union minister. But then look at his continuity. He continued being a member of Parliament till 2019. His number of years in Parliament happened to be twice the number of months I spent in Parliament. I keep on telling Mani, there are people who are known as MPs, ex-MPs. I belong to category of MPs, that is ex-MPs, who didn't complete their full tenure. Ramesh ji and myself have been governor also together. Enormously talented person and committed to his job. After his discourse and after Devendra ji and Nitin ji had indicated everything exhaustively about this university, great university, he was telling me that it is his mission, the Honorable Governor, to see that there is greater connectivity with the outside world also. Let me tell you, Honorable Governor, Nitin ji had not spoken to me, directed me, that I happen to be chairman of Indian Council of World Affairs and that we must sign an MOU with this university within 1 month. Nitin ji was not happy with 1 month, he wanted a shorter time, but my problem is that Director Indian Council of World Affairs is abroad. So he has been good enough to accommodate me on that count. Honorable Nitin Gadkari ji, a person who is known in and outside the country only for accomplishments, achievements, changing our landscape, generating hope, generating employment, and most importantly, overcoming hurdles with innovation. And that is why we have seen a situation which we are seeing at the moment. He asked my wife, have you used the new road to Jaipur which goes to Mumbai? Friends, you will be amazed. The man has really done wonders. We have never used any other road except the latest. You must have seen Guru movie. All of you must have seen. It reflects about a great industrialist. When he was given time of 5 minutes, he concluded in 4.5 minutes और कहा जो आधा मिनट बचा है यही फायदा है। नितिन जी की वजह से देश में जहाँ भी सड़कों में जाते हैं
समय बचता है और वही फायदा है। I am great admirer of Devendra Fadnavis ji, Honorable Deputy Chief Minister and son of the soil. I have been in virtual connect with him. I pleaded with him, let us have more non-virtual connect. A man who is spinally strong and has a shock absorber which any company in the world can emulate. Dr. Subhash Chaudhary, Vice Chancellor, well, credit goes to him. I must tell you, friends, I was a real bright student. I was always a topper. And that was the time when we didn't have Amul. We had Paulson. So whenever I was in the company of my teachers, some students from behind will murmur, Paulson, Paulson, Paulson. Because one has to be on the right side of teacher. He has brought about change, and due credit to him and Dr. Sanjay Dude. Distinguished members in the audience, academicians, faculty members, students, I must greet and salute Honorable Justice Vikas Sepulkarji. I had the occasion to appear before him only once, and that is memorable. A man of incisive clarity. And mind you, everyone who was opposing me was a very known legal luminary of the country. I come from a village, and those of us who come with modest background, they don't make their presence felt immediately. But in the profession, I have been extremely lucky. I was designated senior advocate in 11 years of my practice, headed the High Court bar at the age of 34 and in Bar Council. And those legal luminaries who had good footprint, I used to appear only in one case a day. I can never forget those 3 minutes. The learned judge says, you have only 3 minutes. I said, my lord, 2 minutes. And mind you, the grasp was so effective, the others had no answer. My salutations to him, sir. As chairman Rajya Sabha, I get real jolts also from sitting MPs. But I don't ignore even the ex-MPs. They also enjoy considerable influence. Vikas Mahatme, he did me a great favor that he wanted to be utilized elsewhere. So his term came to an end in 2022. I joined few months later. But I gathered from the Rajya Sabha Secretariat a man of commitment and believed in discipline and decorum. Honorable members of this august assembly, at this historic occasion, I can tell you, for me, it's a delightful moment, a moment I will ever cherish. I am honored and privileged to be associated with such an educational institution whose alumni have made the nation proud and contributed for public welfare extensively. Honorable members of this august assembly, I would agree with the previous speakers, and each of them has signaled it. Transformational change is brought about only by education. It is the education that alone can make a difference. Universities are living entities of sublime idea and ideals. They remain alive eternally in our progress, in our achievements. We have had universities in our country like Takshila, Nalanda,
and have made India a Vishwaguru. These institutions are eternal in our collective national memories. I know the government of the day is taking many initiatives, has put in place several policies that allow full unleashing of your talent, potential, energy to achieve your ideals, aspirations, and dreams. But I would speak from this platform that it is time for our industry in particular to nurture our institutions. I am slightly concerned when leaders of the industry make available astronomical sums to outside universities. We must have belief in our nationalism. We must ensure that our first priority is our nation, our nationalism, our institutions. Just imagine, we have somebody in our country who is given a Nobel Prize, and we give $5 million from the government to a foreign university. Imagine a big house of this country gives $50 million to a foreign university. I know their intentions are not mala fide. They are acting in a proper manner. But time has come when we must do everything to nurture our own institutions. It is in this country we will have Takshila, Nalanda. Nowhere in the world you will find that kind of faculty which is in our country. If you go all over the globe, you will find the top corporate houses are having at their apex level Indian mind. That being the situation, I would make two important suggestions for consideration of the faculty and my young friends, boys and girls. One, economic nationalism cannot be compromised on fiscal considerations. And this is a very serious matter. In this country, क्या दिए, कैंडल, काइट, फर्नीचर, ऐसी चीजें बाहर की आएंगी? क्या हम उनको इंपोर्ट करेंगे क्योंकि कुछ सस्ती हैं? Trade, industry and business has to be extremely sensitive to this. This will help our country greatly, and this can be achieved only by citizens awakening themselves. This effort has to emanate from each individual. And second, reckless use of natural resources. That can't be permitted. No one has a right to use energy, gas, petroleum, water because he or she can afford. Your pocket cannot determine how much you have to use, because there has to be optimal utilization of natural resources. That is our bounden duty. Let me tell you, friends, I am admirer of Gadkariji for two good reasons. He finds solution by innovation and out of box. And that is why you will find in roads in particular, he has developed utilization of material that otherwise were causing huge problem to us in our growth history. I am sure you will bear this in mind. This university, look at the time when it was established. Look at the challenges that were around, and traversing 100 years is absolutely a journey most memorable, fructifying all our aspirations, making us proud every moment. I felicitate all previous Vice Chancellors, the present team and the alumni.
But one idea I have been cherishing for a long time. Alumni of our institutions are natural think tank. They can contribute massively for growth of the nation. They can contribute to policy formulation. So I have given an idea for consideration of academicians and those who are at helm of affairs of universities. Let us have Federation of Alumni Associations. If there is a structured body that has alumni from institutions like yours, IITs, IIMs, and other institutions, and if they converge on a particular point of view, then two results will be there positively. One, they will help governance policies massively. And secondly, they will get an opportunity to structure giving back to the society by giving it to their alma mater. And if they give fiscal assistance to alma mater, make available avenues to the students of alma mater, they will be contributing for societal upliftment, and that will be a great national service. Friends, after more than 3 decades, the country came to have a new national education policy. It's a game changer. It has taken note of our civilizational ethos. It has reduced that part of education which was dragging the student. It has become skill-oriented. It has become aptitude-oriented. It allows you flexibility. And in the evolution of this policy, I am personally aware, by virtue of being at the relevant time Governor State of West Bengal, that inputs were secured from all stakeholders. This policy is already showing results. From this platform, I'll appeal to some of the states who, for reasons which can't be rationalized and who have not adopted this policy, to take a proactive step and end injustice to the students and must immediately adopt national education policy. I'll tell my young students that when I was a student, difficulties were there. It was very difficult at that time. If you pass out from a university or college, you take a leap in the larger world, you will not have resources. I was enrolled as an advocate and wanted rupees 6,000 to have a library of my own. I still remember vividly the bank manager of a nationalized bank who gave me that without security. And look at the big change that has taken place now. Money is no consideration. You have to have an idea in your mind. You have to think out of the box. You have to take initiative. And that is why India can take pride in the number of startups we have, number of unicorns we have. We are envy of the world on those achievements. The historic achievements which the nation has attained under visionary leadership of the Prime Minister Shri Narendra Modi, the world is stunned. I'll give you 3 illustrations. In 2022, we had digital transfers to the extent of $150 trillion US. And those transfers constitute 46% of global transactions. Those transfers are 4 times the combined transfer by digital mechanism in the US, UK, France and Germany. Could you believe it? Look at our achievement to that extent. 4 times. Indian mind is genius.
even if there is no education, we are quick to learn. And that is why a fleet of 850 million smartphone owners, over 700 million internet users, and look at the per capita data consumption on internet. In 2022, per capita data consumption on internet by our citizens was more than that of USA and China taken together. That's a great achievement. We must take pride. We look at the other angle. When it came to world economy status, we were in double digit just a decade ago. We could never imagine where we will be. But in September 2022 came a gratifying moment, a historic moment. Bharat became the 5th largest global economy on the earth. And what an achievement! In the process, we overtook our erstwhile colonial rulers, the UK, the Britain. And by turn of the decade, no one has doubt, India will be 3rd largest global economy. But those who are in the audience as students, some of us may not be around in 2047 when India will celebrate centenary of its independence. That you will be at helm of affairs. My young friends, boys and girls, you are warriors of Bharat at 2047. You will make the difference. You will ensure that at that time Bharat will be Vishwaguru and we will be #1 economy of the world. And why not? Our past is proof of it. Look at institutions, Nalanda, Takshila. Look at our global participation in economy. Look at our economy then. It was center of the world and we were #1. That will happen for sure, and I have no doubt about it. There can be no better place than Nagpur to put my concern. And my concern is, can we allow just anyone untenably, irrationally, without basis to taint, tarnish, demean, insult our constitutional institutions? When the entire world takes India, and IMF has indicated it in categorical terms, that India or Bharat is the favorite destination of investment and opportunity. Some of us want to muddy that pudding. Some of us want to give the other point of view. Friends, time has come when we must do everything as individuals to neutralize anti-India narratives. And you know why it is happening? India never had that kind of global prestige, reputation, standing as it has now. Never ever in the history before an Indian Prime Minister commanded so much respect as Sri Narendra Modi has done. Take the case of his US visit. When he was addressing the legislature there, Congress and Senate, and he said two things: AI, artificial intelligence, and when he said the next thing, America and India, the entire house there spontaneously greeted him, because that is the situation. Both countries are democracies. We are mother of democracy. We are oldest democracy. No country in the world, mark my words, no country in the world
has constitutionally structured democracy as Bharat has. Our constitution provides for democracy at village level, at panchayat level, at Jila Parishad level. Democratic values blossom and flourish in our country. But I put a thought for your consideration. Ours is a country, democratic. And in democracy, no one is above law. Everyone has to be subservient to law. You may be from any clan, any family, you may be of any stature. The law has to take its own course. But surprisingly, when law takes its own course, people take to streets. Can that be countenanced? Can that be overlooked? If one is being visited with consequence in law as per law, the only recourse is to avail the robust judicial system our country has. And our robust judicial system is highly independent. There can be no doubt about it. I therefore appeal to all of you, particularly my young friends, generate an ecosystem where such kind of tendencies are dealt with and neutralized. They are not in the interest of the nation. Friends, what we are seeing all around now, something which we never dreamt, we never thought of, it was beyond our imagination. The Honorable Governor and myself were members of Parliament in 1989. We had one power in our hand, 50 gas connections. And those 50 gas connections, Gadkariji, that was our power. We could in a year give 50 gas connections to anyone we like. Imagine the ground reality today. 170 million gas connections given to the needy families, and everyone has it. So big change has taken place. Everyone in the world, let me tell you, I've been as Vice President out thrice. They are stunned. After all, we are a country of 1.3 billion people plus. They ask me, how did you tackle COVID? Now, COVID was tackled in this country by most imaginative mechanism of the Prime Minister. In a country as large as ours, as diversified as ours, with all political space being occupied differently, the Prime Minister came with an idea of people's curfew to begin with. और वो जनता के कर्फ्यू ने कमाल कर दिया. उस जनता के कर्फ्यू ने एक ऐसी भावना जागृत की कि इस पेंडेमिक का, that is non-discriminatory, it doesn't spare the rich, the poor, developed nations, developing nations. वहाँ हमने क्या नायाब तरीका निकाला. और कहने के लिए हम हमारी सांस्कृतिक विरासत में विश्वास नहीं करते. ये जमीनी हकीकत है. कोविड के दौरान जहां एक और भारत की जनता को वैक्सीनेशन दिया जा रहा था, हमारे देश ने परंपरा को निभाते हुए पड़ोसी देशों को, नीडी देशों को कोवैक्सीन मैत्री के माध्यम से कोवैक्सीन दिया. और अनेक विश्व के नेता जो मेरे से मिलते हैं अपना आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे मौके पर आपने मदद की जिसको हम कभी भूल नहीं सकते. फ्रेंड्स, I will tell my young friends, never fear the fear, never be under stress and tension. Fear of the fear is the greatest drawback a human being can suffer. No one has ever succeeded in the first attempt. Most historical achievements, scientific discoveries, inventions have been after multiple efforts. Therefore, allow full
leg working space for your talent. Be slow to judge and quick to understand. The level of intolerance we have these days, we are just not prepared to listen. We are not prepared to consider the other point of view. We are so intolerant of the other point of view. I appeal to my young friends, don't have that approach at all. Keep open mind with the people who disagree with you. The moment you will appreciate their stand, you will be wiser. That does not mean your stand is wrong. That does not mean you have to agree to their stand. Truth is most important. But the real pursuit of truth is to engage with people who don't think the way you think. और तभी जाकर ये अमृत निकलेगा। यदि अगर हमने हमारी बात को जिद बना लिया, हमने असहमति को विरोध बना लिया, हमने प्रजातांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि दे दी, आई पोज अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ, पार्लियामेंट का क्या मतलब है? पार्लियामेंट का मतलब है कि देश भर के प्रतिनिधि वहां आते हैं, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका दायित्व है टू एंगेज इन डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, बट सर्टेनली नॉट फॉर डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रप्शन। अब इसका उपाय आप लोगों के पास है। वो बात कभी आगे नहीं बढ़ सकती जिसको जन समर्थन नहीं मिलता है। आपसे आह्वान करूंगा, जन आंदोलन बनाइए। उदाहरण हमारे सामने है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, 3 साल तक वो चली, एक बार भी हल्ला नहीं हुआ, प्लेकार्ड नहीं हुआ, वेलमी नहीं आई, शालीनता से हुआ। एंड नेवर फॉरगेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेस्ड incredibly difficult, divisive and contentious issues, but they sorted out them with a spirit of coordination, collaboration, cooperation. Now that is missing. Temples of democracy have virtually been ravaged, and I see a greater danger if temples of democracy, Rajya Sabha, Lok Sabha and state legislatures, if they will not be platform of discussion, debate, dialogue, then the space can't be vacant. It will be occupied by others. And those forces will not be representative. Those forces will not be accountable. Those forces are not that have taken oath to uphold the Constitution. I therefore urge each one of you to activate yourself individually to ensure that there is a narrative afloat indicating we need to engage for the work for which the public is paying and for which Constitution has obligated us. I am sure all steps in that direction will be taken. I come from a farmer's family. The Honorable Prime Minister was good enough to call me Kisan Putra, indicating I am not actively a farmer, but my family is. What a moment of pride for me that 110 million farmers directly receive money in their account. So far this amount has been 2,25,000 crore. I am not on the amount. I am not on the capacity of government of which Mr. Nitin Gadkari is a part. I am on the capacity of the farmer, that the farmer is ready, technically equipped as a result of inclusive banking mechanism to receive that amount.
And that is why this great revolution has taken place. What is happening now? There was a time when power corridors were infested with power brokers, middlemen. There would be people who would extra legally leverage decision making. They will determine how a particular policy will be formulated. We all know it now. These power corridors have been fully sanitized. The institution of power broker, unfortunately, no longer exists for them, and fortunately for the nation, that is extinct. That's a big change. Corruption is the greatest injustice for the common man. We need to have zero accommodation for corruption. That is being seen. But the corrupt have got together. They are trying to find escape routes. They are trying to garner agitational approach also. It is for the ordinary man, who is the greatest stakeholder in democracy and growth of the nation, to ensure that this system which has been evolved not only gets stabilized, but is on a different kind of path that helps our nation at large. Honorable friends, I would leave a thought with you that emanated from Dr. B.R. Ambedkar. And this is particularly for my young friends, boys and girls. I quote, "That which does not make a man worthy, does not teach equality and morality, is not true education." Very wise words. He further goes on to say, I quote, "True education protects humanity in the society, becomes the support of livelihood, teaches men the lesson of knowledge and equality. True education creates life in the society," unquote. I urge you to think critically, read widely, adapt consistently, and widen your horizons steadily as you go forward on your respective journeys. Respect your teachers, respect your family members, be a good citizen, always keep nation first. Keeping nation first is not optional. It is imperative. It is only way. Jai Bharat. Thank you. Thank you very much, sir, for your address this evening. And added to my gratitude today, sir, is a promise that this university would certainly reflect and act upon all the valuable suggestions and advice that you have given us. Thank you very much once again. Ladies and gentlemen, it is indeed gratifying beyond belief that we could witness this centenary celebration program, this very special program of our university, amidst persons of such high standing, such erudite dignitaries on the dais. Today, we are grateful and thankful from the bottom of our hearts to all of our dignitaries and guests for having graced this auspicious ceremony today. Friends, as we complete 100 years of our glorious existence, this just marks the beginning of yet another journey of the next 100 years that we eagerly look forward to. With the blessings and wishes that have showered from the addresses of all our guests and dignitaries today, coupled with our own dedication and commitment, we are very sure that this university will reap a rich harvest of sparkling gems in the next 100 years, just as we did in the 100 years that have gone by. On this note, ladies and gentlemen, it's now the time to draw the curtains on this centenary celebration program, and may I request all of you to kindly rise in respect for the national anthem. शताब्दी समारंभाची सांगता राष्ट्रगीताने होईल.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय